about the threats and the losses of the biodiversity. In first lecture, we have discussed about the definition of the biodiversity, types of the biodiversity, and the significance of the biodiversity. But in this lecture, I will explain about the losses or the threats that are facing the biodiversity globally, regionally, and locally. What are the threats or losses? Threats are actually the causes for the endangeredness, causes for the extinctions, causes for the rareness, and these losses are basically enlisted in following 5 to 6 headings. The first major threat towards the biodiversity is the habitat loss. The first threat is habitat loss. Habitat loss is also known as fragmentation and destruction of the habitat. It is also called as fragmentation and destruction of the habitat. So this is the leading or the major threats towards the biodiversity globally, regionally, and locally. Number 2 threats is the fast climatic changes. Nowadays, the world is facing the climatic changes. As the temperature is rising, greenhouses are major issues, floodings, all these activities are known as climate change. The second major threat towards the biodiversity is the climate change. And third major threats to the biodiversity globally is known as our exploitation of the natural resources. Our exploitation of the natural resources. So this is another threat towards the biodiversity loss in regional level or country level and at the world level. And fourth major threat is called as pollution and population. Pollution and population. And the fifth loss towards the biodiversity is invasive species. Invasive species. So these are basically generally 5 types of the threats or losses for the biodiversity. One by one we have to discuss all these things. First one is called as habitat loss or habitat fragmentation or destruction of the habitat. So this is a major threat where the species, when there is no habitat, there is no species. So the habitat is the foundation, soil is the foundation. So keep protected the soil, species become conserved. Why fragmentation occurs? Basically fragmentation occurs due to the urbanization. जब आप सिटीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं, वाइड लैंड को आप सिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस इज द मेजर थ्रेट दैट इज कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन. सेकेंड इज द एक्सटेंशन ऑफ द रोड्स एंड बिल्डिंग्स. जब आप रोड्स एंड बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे भी हैबिटेट लॉस होती है, एक्सटेंशन ऑफ द रोड्स. इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ द वाइल्ड लैंड टू द कल्टिवेटेड लैंड. जब आप एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस करते हैं, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, आप ज़्यादा आबादी हो जाती है, तो आपको फूड की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप रिसोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस. ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन. इसके अलावा बहुत सारे एरियाज में आपने ऑब्जर्व किया होगा, देयर इज ए इकोनॉमिक वॉर्स. ठीक है, कि हम हर कंट्री चाहता है कि वो दूसरे मुल्क से ज़्यादा डेवलप हो इकोनॉमिकली, तो हम डिफरेंट फ्रेगमेंटेशंस करते हैं, रॉक्स को हम तोड़ते हैं, मिनरल्स की तलाश करते हैं, मादनियात की तलाश हम करते हैं. तो मिनरलाइजेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू दी हैबिटेट लॉस. ठीक है, तो मिनरलाइजेशन इज अनदर काज फॉर हैबिटेट लॉस. इसके अलावा जब आपके पास एक रिच फॉरेस्ट एरिया होता है, जिस तरह लॉट ऑफ एग्जांपल इज द स्पेशली द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हिमालय फॉरेस्ट, कोहिंदू फॉरेस्ट, जो हमारे रीजन्स में हम जो साउथ एशिया में करते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर द हैबिटेट लॉस. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो cause of the habitat loss.
ठीक है। जब आप फेलिंग ऑफ द ट्रीज करते हैं, कटिंग ऑफ द ट्रीज करते हैं, आइदर फॉर मेकिंग द वुड, आइदर यूजिंग द वुड, आइदर मेकिंग योर हाउसेज बाय द वुड्स, और आइदर यूज द वुड फॉर द फ्यूल वुड पर्पसेज, यू कट द फॉरेस्ट, यू कट द ट्रीज। और आपको पता है कि जो एक ट्री होता है, इट इज द होम फॉर द बायोडाइवर्सिटी, यानी बहुत सारे बर्ड्स उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे उसके साथ बायोडाइवर्सिटी जो होती है डिपेंडेंट होती है फॉर द हैबिटेट टू दैट ट्रीज। लेकिन जब आप कटिंग्स कर लेते हो, फेलिंग ऑफ द ट्रीज कर लेते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो, तो यू आर बेसिकली causing the threats towards the habitat. So these are the basically 5 to 6 important areas that come under the heading of the habitat laws. So the habitat laws is the major leading laws for the biodiversity. और according to an estimate, जो एक एस्टिमेट है IUCN का भी है, इकोसिस्टम मिलेनियम का भी है, बहुत सारी असेसमेंट थ्योरीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक जो स्पीशीज को सबसे बड़ा थ्रेट होता है, द मेजर थ्रेट्स टुवर्ड द स्पीशीज लॉस इज द हैबिटेट। और तकरीबन दुनिया में 40% जो लॉसेज हैं ड्यू टू द हैबिटेट लॉस है, ठीक है। तो बहुत सारी आपको एक्सपीरियंस होगा इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर कंट्री, इन एरियाज ऑफ द साउथ एशिया एंड वर्ल्ड, जिन एरियाज में ये हैबिटेट लॉस होता है, स्पीशीज दे बिकम डिसअपीयर, स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड, स्पीशीज बिकम थ्रेटेंड, और आफ्टर मेनी इयर्स माइट बी स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल्स देते हैं, तो हमारे पास जो मेजर बिगर रेंज है बायोडाइवर्सिटी की, दैट इज कॉल्ड इज हिमालयन रेंज, ठीक है। तो हिमालयन रेंज इज अबाउट 3200 किलोमीटर लॉन्ग रेंज ऑफ हिमालय दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, occupied Kashmir, and then and towards the China, including the Myanmar, Burma, Bhutan, Nepal, Pakistan, India. So this is the major Himalayan biodiversity zone of this region, which is the biggest range in the world with respect to the richest biodiversity. Either the biodiversity of the wildlife, either the biodiversity of the plants, biodiversity of the insects, biodiversity of the microbes. So this is the major area in this region. But nowadays, deforestation, mineralization, agricultural extensions, extension for the food, extension for urbanization, these are the basically threats. Or recently my students visited the Western Himalaya and they noticed that there is a lake burst floodings. Lake burst floodings क्या होती है? जब ग्लेशियर मेल्ट्स होते हैं, टेम्परेचर राइज करता है, तो उनका पानी जब अपर रीजन से लो रीजन में, वैलीज में आता है, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लेक्स होती हैं उनमें जब पानी भर जाता है तो ब्रस्ट कर जाती हैं। जब वो ब्रस्ट करती हैं तो पूरे एरिया में फ्लड आ जाता है। जब फ्लड आता है तो बहुत सारी स्पीशीज वैनिश हो जाती है, या डिस्पीयर हो जाती है, या ट्रांसपोर्ट हो जाती है, या मूवमेंट हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और जब दूसरी जगह जाती हैं तो डेफिनेटली वहाँ फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड, स्पीशीज बिकम थ्रेटेंड। तो बहुत सारी एग्जांपल्स दे हैव रिपोर्टेड, वसीम गिलानी एंड मंजूर एंड देयर टीम स्पेशली, they are in last two months they are in expedition with Dr. Amayu from Azad Kashmir University. He is a chairman of the botany, and they have noticed that there is a lake brush floodings that are actually the fragmentations of the habitat loss. So the number of the species become disappear in last 5 years. So this is another important area that should be addressed with respect to the species restoration and the conservation. The second step, the second major threat towards the biodiversity is the, you know that everyone noticed that there is a fast climatic changes, either at ground levels, either at mountain levels, either in the sea, everywhere you see rising temperature. हम बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज कर रहे हैं टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, और बहुत ज़्यादा हम हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज, वी आर इंक्रीजिंग द पोल्यूशन एंड वी आर एडिंग द पोल्यूटेंट्स टू द लैंड, पोल्यूटेंट्स टू द एटमॉस्फेयर, पोल्यूटेंट्स टू द वाटर. तो ये जितनी भी हम जो इसमें, क्योंकि मेजर इसका जो कैजुअल एजेंट है होमो सेपियंस है, ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की वजह से ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक चेंजेस होती हो. एक असेसमेंट के मुताबिक जो इस वक्त 20% जो लॉस है स्पीशीज का, या जो मेजर थ्रेट्स है, वो है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. तो 20% स्पीशीज लॉस इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. अगर हम इसी रेट से रहे, इसी रेट से हम क्लाइमेट में चेंजेस करते रहे, तो इन नियर फ्यूचर
नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चाहे वो प्लांट्स की हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, बर्ड्स की हैं, डॉल्फिन्स की हैं, इंसेक्ट्स की हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज जो होगी वो लॉस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज होता है इसका जो मेजर मेजर जो कैजुअल एजेंट होता है वो बेसिकली होता है राइज ऑफ द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो उससे हमारे ग्लेशियर जो होता है मेल्ट हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे हॉरिकॉन्स आप देखते हैं जी, फ्लडिंग्स हो जाती है, ज़्यादा स्टॉर्म्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशंस होती हैं, तो ये सारे ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्पीशीज को, डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी सोशल लाइफ को, डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेन ऑफ रेट जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न होता है या रेनफॉल पैटर्न होता है, इन ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो योर स्पीशीज आर फेसिंग दीज थ्रेट्स। तो क्लाइमेट इज बेसिकली अनदर इम्पॉर्टेंट थ्रेट्स टुवर्ड द बायोडाइवर्सिटी। और जो क्लाइमेट के लिए जो कैजुअल एजेंट है, इट इज़ द होमो सैपियंस, दैट इज ह्यूमन बीइंग। अगर आप नेचुरली जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले, उसमें स्पीशीज का लॉस बहुत मिनिमम होता है, ठीक है, या नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन एक्सीलरेटेड डिजास्टर्स होते हैं उसमें स्पीशीज का लॉस जो होता है वो ज्यादा होता है। और अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज नेक्स्ट 20 ईयर्स। जब नेक्स्ट 20 ईयर्स में हम इंटर हो चुके होंगे, माइट बी 2040 or 2045, the temperature of the earth planet will increase about 1.5 degree centigrade। और आपको पता है कि सिर्फ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और आज जब बढ़ता है तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट हो जाती हैं, उसमें डिजर्टिफिकेशन हो जाती है, ड्राउट स्ट्रेस हो जाती है, आपकी फूड कम हो जाएगी, स्पीशीज जो इंडिकेटर स्पीशीज होती है या सेंसिटिव स्पीशीज होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे इफेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू द इंक्रीज हायर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इज अनदर इम्पोर्टेंट मेजर थ्रेट टुवर्ड द बायोडाइवर्सिटी। और फिर मैंने आपको बताया कि थर्ड मेजर जो थ्रेट्स है टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड एज आवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है कि हम ओवर हंटिंग करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, फिशिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू स्टडी इन कीनिया, according to study in Kenya नेशनल पार्क, बविंडी नेशनल पार्क, आपने शायद वगैरह इन सबको पता होगा, बविंडी नेशनल पार्क इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट एरिया इन द वर्ल्ड इन साउथ अफ्रीका विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ द स्पीशीज। आपको पता है कि दुनिया में दो बड़े मेजर जोन्स है जहाँ स्पीशीज रिचनेस होती है। एक ट्रॉपिकल जोन है और एक हमारे पास मॉइस्ट हिमालयन या वेस्टर्न हिमालयन जोन है। तो ये जो ट्रॉपिकल जोन है, रेन जिनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, वहाँ स्पीशीज रिच इसलिए होते हैं कि वहाँ हेवी प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा होता है। तो वाटर जहाँ ज़्यादा होगा देयर इज ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज। स्पीशीज की भी डाइवर्सिटी रिच होगी, इकोसिस्टम की भी वो जो क्या होते हैं डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये जो बविंडी नेशनल पार्क इन कीनिया, there is a major tree that is called as Prunus africana. That is called as Prunus africana. Prunus africana is a native tree that belongs to family Rosaceae, which is one of the major tree in the Bavindi National Park in Kenya. So there is a rich culture of the wood cuttings. Wood cutting of this tree that is used in the wood carving industry. जिस आप वुड से आप घर बनाते हो, कंस्ट्रक्शंस करते हो, बहुत सारे फर्नीचर्स आप बनाते हो, तो वहाँ ये जो ट्री है दैट इज बेसिकली कटिंग फॉर द वुड कार्विंग इंडस्ट्री। इससे डिफरेंट डेकोरेटिंग पीसेस बनते हैं, ऑर्नामेंटल पीसेस बनते हैं, जो कि यूरोप में, अमेरिका में वहाँ आगे ट्रेड किया जाता है और उस ट्रेड से वो पैसा अर्न करते हैं। लेकिन 1990 में जब ये इसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी, ओवर कटिंग हो गई, तो इस ट्रीज को थ्रेट्स हो गए टुवर्ड द बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी पॉपुलेशन इज डिक्लाइन, पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग। फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, कीनिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि जो पर्सन या जो डिपार्टमेंट एक ट्री काटेगा, 1 ट्री काटेगा, वो 10 दरख्त लगाएगा, 10 ट्रीज दे कल्टिवेट। तो फिर उन्हें सस्टेनेबल यूज डेवलप कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज SDGs, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी एक दरख्त काटने के साथ आपने 10 ट्रीज लगाने। तो देन 2000 में ये फिर इकोसिस्टम रिस्टोर हो गया। और इस वक्त अगेन जो 90 से पहले जो इसकी पॉपुलेशन थी या जो
forest था Prunus africana का, now it is restored in 2000, now it is a very highest spot with respect to species richness. लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं such type of practices और conservation जो sustainability होती है हमारे एरियाज में ऐसे नहीं है. अगर आप 2000 से पहले देखते हैं तो पाकिस्तान के जो फॉरेस्ट एरिया था दैट इज अबव 5%. 5% मीन्स के वो भी कम है. किसी भी कंट्री का टोटल एरिया का 25% एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट सेक्टर, लेकिन हमारा 5 से ज़्यादा था तो हम ज़्यादा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन था, ज़्यादा रेनफॉल होती थी. और आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ इस्लामाबाद. जब हम MSc में थे तो इस्लामाबाद में हर दूसरे दिन बारिश होती थी क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट एरियाज अरेंज, चाहे वो मरी के थे या हमारा मार्गिल है इंसान. बट नाउ आप देखते हैं कि अब उसी तरह रेनफॉल होती है, या तो 1 माह बाद या 2 माह बाद, तो पैटर्न चेंज हो गया. ठीक है, तो जिन एरियाज में भी फॉरेस्ट सेक्टर ज़्यादा होता है, ट्रीज ज़्यादा होते हैं, एफॉरेस्टेशन होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट भी क्लीन होता है, वहाँ की रेनफॉल भी होती है, वहाँ की बायोमास ज़्यादा होता है कंपेयर टू दोज एरिया वेयर इज ड्राउट, वेयर इज डिजर्टिफिकेशन. और ये जो हम एडअप करते हैं लैंड पोल्यूटेंट्स, जो हम सीवेज हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम एडअप करते हैं टूवर्ड्स द सॉइल, एडअप करते हैं टूवर्ड्स द एयर, एडअप करते हैं टूवर्ड्स द वाटर, तो उससे आपके जो एरिया होता है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है. जब आप एसिडिटी ज़्यादा कर देते हो तो दैट आल्सो डायरेक्टली इफेक्ट दी फॉरेस्ट. फिर बहुत सारे दरख्त होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी स्पीशीज खत्म होना शुरू हो जाती है. तो उसकी एग्जांपल है ये प्रूनस अफ्रीकाना. और इसी तरह से हमारा जो रिवर इंडस है इन दिस रीजन्स, that is also one of the important area with respect to the wetland biodiversity, और जिसको हम aquatic biodiversity कहते हैं. तो ये एरिया भी एक रिचेस्ट एरिया था. बट नाउ यू नो दैट इंडस का जो हाल है उसमें हमने कितना पोल्यूशन एडअप कर दिया, कितने पोल्यूटेंट्स हम ऐड करते हैं, तो हमारा जो एंडेमिक स्पीशीज दे आर गोइंग टू डिक्लाइन, एंडेमिक स्पीशीज दे आर गोइंग टू रिड्यूस. उसकी एग्जांपल है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन. ठीक है, Indus blind dolphin is the species of dolphin that is endemic to the Indus River. Now the population is going to reduce due to the addition of these pollutants. या तो हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, और इसी तरह हमारे जो इंडिजिनस या नेटिव स्पीशीज हैं टर्टल्स की या टोटाइस की, ये जो कछुए वगैरह होते हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू डिक्लाइन ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, तो हम उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा अर्न करते हैं, या फिशिंग हम ज़्यादा करते हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज दे आर फेसिंग द थ्रेट्स. और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और एक्सप्लॉयटेशन की इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स, इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, आइदर फॉर ट्रेड, either for economic use, either for social use. You are going to decline the population of those resources. You are basically threats toward those resources of the natural resources. So overexploitation is another important threat for the loss of the biodiversity. It's clear about this. Any questions about these three important areas? That is the first is the habitat destruction and fragmentation and habitat loss, and second is the climate change. That is the global warming, greenhouse gases, floodings, and so these are come under the climate change. And third is about the over exploitation of the natural resources for the trade, for economic development, for everywhere. Okay, and the fourth important loss for the biodiversity is that is population and pollution. The fourth threat is population and pollution. पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन ये डायरेक्टली लिंक करते हैं जो हमने ऊपर चीजें डिस्कस की हैं, चाहे वो हैबिटेट लॉस है, आइदर इट इज अ क्लाइमेट चेंज, आइदर इट इज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द पॉपुलेशन. व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस, योर डिमांड्स आर इंक्रीजेस. जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपकी फूड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपकी डिपेंडेंसी जो नेचुरल रिसोर्सेज पर है वो बढ़ जाती है. व्हेन यू आर यूजिंग एन हायर अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे फूड है, मेडिसिन है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, all these are basically declined due to the increase in the population. जब population increase होती है तो you have wasted a lot of things, solid waste,
pollutants in the water, in the soil, in the atmosphere, तो आप बहुत ज़्यादा एडप्ट करते हो वेस्ट को टूवर्ड्स योर बायोस्फीयर. जब आप बायोस्फीयर में एडप्ट करते हो पोल्यूटेंट्स को, तो बेसिकली यू आर थ्रेटनिंग द स्पीशीज, और जो कि इंडिकेटर स्पीशीज होती हैं, सेंसिटिव स्पीशीज होती हैं, वो या तो अपना हैबिटेट चेंज कर देती, वहाँ से शिफ्ट कर जाती किसी और हैबिटेट में, और किसी और जगह अडॉप्ट करने के लिए स्पीशीज को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट. तो उसी दौरान वो स्पीशीज जो होती है लॉस हो जाती है. तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने नोट की होगी विद इन योर रीजन, विद इन योर कॉन्टिनेंट, एंड यू हैव टू लर्न अबाउट दीज शिफ्टिंग ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू द अदर कॉन्टिनेंट्स. मूवमेंट्स हो जाती है स्पीशीज की, तो उसमें बहुत सारी स्पीशीज जो होती हैं वो लॉस हो जाती हैं. तो पॉपुलेशन इज अ मेजर थ्रेट्स to all the losses of the biodiversity, and population is directly linked to the pollution, or pollution is directly linked to the climate change, and climate change is directly linked to the habitat loss. So all these basically threats are directly or indirectly linked with each other, and they are causing the threats and reducing the biodiversity in the world. Fifth loss or the major threats towards the biodiversity is the invasive species, yeah, exotic species. Invasive species क्या होती हैं? Invasive species are those species which are not native to your regions. They are exotic. They are introduced to your regions. So invasive species, they are also causing the threats to the indigenous species, either animals, either microbes, either plants. So these are basically another threat. For example, you have noticed that the introduction of Parthenium in this region, especially the South Asia, and introduction of the Lantana camara in our region, introduction of number of the other insects. I think in last 2 years you learn about the एक वो इंसेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया से, सिंध और बहुत सारी टिडिदल जो होता है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द इन्वेजिव स्पीशीज टू दिस रीजन. तो सो दे हार्म अ नंबर ऑफ द क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स को उसने काफी लॉस किया था. तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि, और इसी तरह से बहुत सारी, अगर आप एक्सोटिक फिश को इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने इंडस में, तो आपकी जो नेटिव पॉपुलेशन है फिश उसको खत्म करना शुरू कर देता है. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि जिनका ओरिजिन कोई और होता है, बट दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू योर रीजन एज एक्सोटिक, एज इन्वेजिव. दे आर आल्सो कॉजिंग द थ्रेट्स टुवर्ड द बायोडाइवर्सिटी. It's clear? So these are basically losses or threats, major threats toward the biodiversity. Now we will discuss about some examples in the world. In recent 5 years, number of the examples we have noticed around the world. Number one, early 2019s and late 2020. 2019 and 2020. You listen the news about the wildfire in Australia. आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक फॉरेस्ट में फायर हुई, वाइल्ड फायर थी, जिससे नंबर ऑफ द एरिया, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर एरिया दैट इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस वाइल्ड फायर. और उस वाइल्ड फायर से अबाउट 3 बिलियन एनिमल्स आर अफेक्टेड, और उसकी डेथ्स हुई हैं 3 बिलियन एनिमल्स की. तो हाउ दिस फायर इज a drastic loss towards the biodiversity in Australian continent. और इसी तरह से recently in last 5 years you listen the news about the Atabad lake floodings from Gilgit-Baltistan, and recently our students when they are in exploration and expedition, they notice that there is a lake outburst due to the ice melting, glacier melting, due to rise of the temperature, due to fast climatic changes. So ये जो floodings है, last 2022 you hear about the news of major floods in Sabat and other areas. So that is also one of the casual agent in this region. और इस तरह से बहुत सारी आपने दुनिया की न्यूज़ पढ़ी होगी कि कुछ एरिया में फायर, कहीं फ्लडिंग, कहीं अर्थक्वेक्स आए, और उससे फिर वो आपका जो बायोडाइवर्सिटी था दैट वाज लॉस, दैट वाज थ्रेटेंड. तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, लेकिन नेचुरल डिजास्टर को फास्टर करने वाली जो invasive species that is called as that is called as Homo sapiens. ठीक है, अगर Homo sapiens सस्टेनेबल डीप थिंकिंग के लिए अगर रिसोर्स को सस्टेनेबली यूज करता है,
केयर करता है, नेचर को प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है, तो फिर कोई थ्रेट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर आपका है, जिस तरह इन्वेजिव स्पीशीज का होता है, यू आर एडिंग मोर एंड मोर पोल्यूशन टू द सॉइल एंड वाटर, यू आर बेसिकली, आप देखेंगे आप पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी जो माल न्यूट्रिशंस हैं ड्यू टू दी पोल्यूटेड वाटर्स, तो ये जितने भी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स टू द सॉइल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हम एडअप कर रहे होते हैं वो बेसिकली फिर हमारे लिए भी थ्रेट्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू केयर द बायोडाइवर्सिटी, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी in order to avoid such losses. ठीक है, any question? बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई अगर आपने कोई और एग्जाम्पल नोटिस की है किसी एरिया में, रीजन्स में लॉस की या थ्रेट्स की, और आई वाज इन लास्ट मंथ आई वाज आल्सो इन exploration of some plants diversity in the Koedrukash. Amir Sohail was a company with me and Najib was also there. हमने देखा है कि एक पूरा एरिया कुमराट का that was badly affected by 2020 floods, तो उसने बहुत ज़्यादा ट्रीज को वहाँ से अपरूट भी किया है और बहुत सारा कटिंग्स भी करते हैं, और वहाँ लोग जो क्या उसको कहते हैं, जो वुड माफिया या टिम्बर माफिया जो होता है, तो टिम्बर माफिया प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर डिफॉरेस्टेशन, और ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर रिसोर्सेज, वी हैव नोटिस दिस एरिया स्पेशली, दैट वाज अनदर इम्पोर्टेंट एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू दिस। और इसके अलावा और कोई एग्जांपल है, बलूचिस्तान में शिफ्ट हुई है स्पीशीज की ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज देयर इज अ चेंज इन द रेन ऑफ रेनफॉल, तो वहाँ जो वाटर पहले ज़्यादा बारिशें होती थी, अब कम होने की वजह से वहाँ की जो एप्पल फील्ड्स है जहाँ एप्पल अच्छी किस्म के प्रोड्यूस होते थे, ज़्यादा से लेके आनवर खानोजाई और ये जो एरिया है, now the peoples are cultivating the other crops like garlic and other vegetables and they replace the apple range, so इस तरह से भी स्पीशीज का लॉस होता है, जो उसकी इंडिजिनस स्पीशीज होती हैं वहाँ से लॉस होती है। इस तरह से डिजर्टिफिकेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज in South Asia, in Pakistan, in India, so desertification is another important threat towards the biodiversity because desertification directly affect the species, और खासकर जब पानी नहीं होगा, आपको पता है कि वाटर इज लाइफ, वाटर नहीं होगा तो स्पीशीज नहीं होगी। सर एक तरफ फ्लड की वजह से डाइवर्सिटी लॉस नहीं हो रही है, लेकिन उसी फ्लड की वजह से डिफरेंट रीजन के अंदर प्लांट्स को ले आ जाते हैं, इसको हम इस हवाले से भी देख सकते हैं कि कभी कभी ये, क्योंकि हमारे इलाके में कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो पहले नहीं थे, लेकिन आपको फ्लड की वजह से वहाँ पर कुछ वाइल्ड, इसको हम कहते हैं स्पीशीज शिफ्टिंग, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं कि वहाँ सर्वाइव करना, लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ सस्टेन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उस एरिया के लिए अडॉप्टेड होती है, नेचर ने उस एरिया के लिए प्रोड्यूस किया होता है, तो ज़्यादा सक्सेसफुली वहाँ अडॉप्ट होती है। या हम कल्टिवेट तो कर सकते हैं, डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, वाइल्ड हम ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन माइट भी वो लंबे अरसे तक न चले, तो दैट माइट बी चांस। तो अर्बनाइजेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट थ्रेट, यस। और ये ऊंचा ये जो आपने कुरुस की लेकर की, ये कुरुस अफ्रीकन, इस तरह से एक एग्जांपल कुरुस में भी हमारे पास जो तकरीबन 2 साल से हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, वो है एक वाइल्ड बदाम प्रूनस सोसाइटी, यस, पुरानी का, जो इस इलाके को एंडेमिक है। या तो हमने 2-3 दफ़ा जिस जगह की इनकी टाइप लोकेलिटी थी, वो बस एक ही जगह पे इनके 2-3 ट्रीज हैं, पॉपुलेशन में पूरे 2-3 इंडिविजुअल्स हैं, तो 2-3 जगह हम गए, इसको ऑब्जर्वेशन लगा, कोई स्पेसिमेन हमें नहीं मिला। एक सीरेसस रचिंजिराई, वो है ज़्यादा तो एंडेमिक है पाकिस्तान में, वो जगह भी हमने 2-3 दफ़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, उस जगह पे इस प्लांट को कोई जो है वो नहीं मिला। इसके अलावा एक है स्ट्रेगल्स को मैंने काम किया एमफिल में, और रिसेंटली यू हैव पब्लिश्ड अ पेपर अबाउट स्ट्रेगल्स एंडेमिक इन पाकिस्तान। इसमें एक स्पीशीज है स्ट्रेगल्स स्वातेंसिस, स्वात में एंडेमिक है, वो त्रोरे के इलाके है कलाम से ऊपर। पिछले हफ्ते भी हम गए थे, एक हफ्ते की जरूरत है, तकरीबन 2-3-4 तरीके की इसी इलाके को पूरा एक्सप्लोर किया मुख्तलिफ सीजन में। ये भी लग रहा है कि तकरीबन एक्सटिंक्ट है, नॉट एक्सटिंक्ट, इट इज नियर टू एक्सटिंक्शन, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। या so these are few examples, especially with respect to the Amjad research during MPhil about Aspergillus. So you observed such type of example. Any other example you have noticed in your area, in your regions?
endemic to Himalayas are Trillium grenanum and Podophyllum hexandrum, Virginia seriatum, Ulmus villagiana, endemic plants है लेकिन extent हो रही है. मैंने वर्ड यूज करना है इंडेंजर्डनेस का. वी हैव टू यूज द वर्ड इंडेंजर्डनेस आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. एक्सटेंशन जो होती है, एक्सटेंशन इज अ नेचुरल प्रोसेस और एक्सटेंशन में नंबर ऑफ द ईयर्स लगते हैं, तो एक्सटेंशन इतनी जल्दी होती नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग उसको फास्ट कर देता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 की स्पीड से चल रहे एक्सटेंशन की, तो ह्यूमन बीइंग एक्सेलरेट द स्पीड अबाउट 1000 टाइम्स हायर देन दिस नेचुरल एक्सटेंशन. So might be it is a endangered or a critically endangered, and after might be in future like 40 years or 50 years that become extinct. So there is chances. Sir, Yes. जब हम पढ़ते हैं इन्वेजन स्पीशीज का नेचर का, उसमें प्लांट्स और हर्ब्स का बहुत ज़्यादा बताया गया है. अगर हम लिटरेचर पढ़ें तो उसमें श्रब्स का नहीं जिक्र. श्रब्स का बता सकते हैं किस तरह उनका इनका मेथड है और क्या उनके लॉसेस. Yes. I just report an example of Lantana camara, that is a shrub. Lantana camara is basically the European species that was cultivated in Europe for ornamental purposes. For ornamental purposes, multicolor flowers, either oranges, pinkish, bluish. So this is whitish also. But when the seeds or the pollens, they escape from control condition to the wild condition, it become invasive species. When it is introduced in Pakistan, India and South Asia, now it's a wild species, that is a Lantana camara. And everywhere you see the aggressive behavior of this growing shrub that invade the other herbs, invade the other shrubs of the local plant. For example, Ceresa opaca is a local plant, Justacia detoda is a local plant, Otistigia limbata is a local plant. These are the medium-sized shrub. Lantana is also medium-sized shrub, but when it is invaded, all these species vanish, and everywhere you see the long ranges of this Lantana camara. So Lantana camara is a shrub that is invasive to this region. So another important tree, I give you the example, is eucalyptus. Yes, sir. Yes. Eucalyptus, there are different species. So eucalyptus is also invasive or exotic species in this region, especially the South Asia, that was introduced from Australia to this region. So that is also invasive. Where you cultivate this tree, there is no other cultivation of the crop like wheat, rice or any other species they found surrounding this tree. So there are also examples of such trees. Popular is also exotic in KPK, especially the area from Swabi to onwards, Swab, that replace the native species, that is the prunus, जो peach है ना, prunus persica जिसको आलू कहते हैं, that is also reduce the population by this type of the tree like poplar, eucalyptus and so many examples. Conocarpus. Cornocarpus is another example. Yes, this is an exotic tree. Cornocarpus is another example of the tree that is introduced from Africa and Arabic world to this regions. और ये आपके सारे साउथ जो आपका एरिया है कंट्री का, that is everywhere Cornocarpus, और वो माइट में अगले 20-30 सालों में Cornocarpus होगा और अपने इंडिजिनस नहीं होंगे. When Pakistan shifted the capital from Karachi to Islamabad, there is no trees in this area, especially this where you are sitting in Qaeda University and the Parliament House. So they cultivate the Brassicaceae papyrifera, that is a pepper mulberry tree. Now it is an invasive species to the native shrubs and the herbs and the trees in this region. And the CDA have launched a program to eradicate this exotic species. Or why we call invasive species aggressive? Because they produce highest quantity of the seeds and highest quantity of the viable pollens. So their dispersal mechanism is very strong. So that's why they are more aggressive, more invasive, more exotic. Number one. Number two, their seeds and pollens are lighter in weight. Number third, they are more adaptable to harsh condition. That's why invasive species replace the native and indigenous trees and herbs and shrubs and so many other areas. Okay. Absence of natural predators. Yes. Yes. एक तरफ हम कह रहे हैं कि इन्वेसिव स्पीशीज जो है वो और ट्रीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करी और एक्सेलरेट करी अपनी पॉपुलेशन को. दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अगर स्पीशी का हैबिटेट लॉस हो जाता है तो वो उस जगह जाके दूसरी जगह ग्रो नहीं कर सकती.
तो ये क्या इसमें क्या डिफरेंस? जो इंडिजिनस ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिजिनस जो स्पीशीज होते हैं, गुड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है ससूरिया लापा कॉस्टस, वो नेटिव टू मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज है। अब वो स्पीशीज है, उसका अगर हैबिटेट क्यों वो वहीं की स्पीशीज है, अगर वहाँ स्पीशीज लॉस हो जाता है तो फॉरएवर इंडेंजर्ड या क्रिटिकल एरिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये इट मीन कि उसके हमने लॉस कर दिया, हैबिटेट को खत्म कर दिया। लेकिन इन्वेजिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो आज कंडीशन की अडॉप्टेबल होती है, इवन के फ्रेगमेंटेड रॉक्स में भी वो ग्रो कर जाती है, जहाँ क्योंकि जो नेटिव स्पीशीज होती है वो स्टेबल स्पीशीज होती हैं, वो अपनी एक खास हद से, फॉर एग्जांपल वी आर द एस्टेब्लिश्ड स्पीशीज ऑफ द सिटीज। अगर हम सिटीज में रहते हैं और हमें कहेंगे आप 2 साल उधर डेजर्ट में रहा, हम नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हम वहाँ के एनवायरनमेंट उन चीज़ों को हम एडॉप्ट ही नहीं करते। लेकिन ये क्योंकि लार्जर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, सीड लार्जर क्वांटिटी में पोलन बनते हैं और फाइबर्स होते हैं, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है, तो हर तरह के एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो जाते हैं।